In this video, I'll be discussing all the important mountain passes जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के रीजन में हैं, including हिमाचल प्रदेश। ये जो नदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है, इसमें काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वैलीज हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। So this should be a comprehensive one to revise most of the important passes of Jammu Kashmir, Ladakh and Himachal Pradesh. We start एकदम नॉर्थ से। नॉर्थ में where we have the Siachen Glacier। ये ग्लेशियर एकदम इंडिया चाइना के बॉर्डर में है। इस ग्लेशियर के ऑन द वेस्टर्न साइड सक्शाम वैली एंड इसी के आइदर साइड ऑफ सियाचिन ग्लेशियर आर टू इंपॉर्टेंट पासेस। एक है काराकोरम पास जो ईस्टर्न साइड में है और वेस्टर्न साइड में वी हैव द अगिल पास। अगर आप और फर्दर नॉर्थवर्ड जाते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर में वी हैव किलिक पास। किलिक पास is the northernmost point of India if I consider all parts including the POK parts. Otherwise, Kilik Pass POK में आ जाता है. So most of the official records record Indra Col जो south of Siachen है as India's northernmost point. Indra Col India का northernmost point है in the Indian administered territory. लेकिन आप POK लेके चलेंगे, the northernmost point of India is Kilik Pass. So we have Karakoram Pass, we have Aghil Pass, and we have got Kilik Pass. Now look at the reference of Srinagar and Leh. Leh से north में is a river called as the Shyok River. Shyok River Leh के पास से एक river Nubra से निकलती है, वहाँ पर है Khardungla Pass. Khardungla is the gateway towards Nubra Valley, and that area is, I said, the basin of river Shyok. और इधर अगर आप श्रीनगर देखें, श्रीनगर से अगर नॉर्थ जाएं टुवर्ड्स पीओके अगेन, वी हैव द बुर्जिल पास. बुर्जिल पास इज ऑन द ग्रेट हिमालयस. इट लिंक्स श्रीनगर विथ द नॉर्दर्न पार्ट्स व्हिच इज इनटू द पीओके. नाउ बिटवीन श्रीनगर एंड ले there are three more important passes. One important pass is Zojila Pass. Zojila Pass is on Zaskar range. Zojila is more or less where we have Amarnath. Zojila is more or less where we have the Sonmarg region. Zojila Pass से further eastwards towards Leh is a pass called as Fotu Pass. Photu. Fotu Pass of KNCRTs में है. Fotu Pass भी was on the Zaskar range. So Srinagar और Leh के बीच में we have got Zojila Pass and we have Fotu Pass. इसके अलावा if you come down south you have this range called as Pir Panjal range. Pir Panjal range में important pass है called Banihal. Banihal Pass अनंतनाग के साउथ में है. जम्मू से जाते हैं to श्रीनगर, so you'll cross Banihal Pass in Pir Panjal and then enter the Kashmir Valley. So Banihal Pass is considered as the gateway into the Kashmir Valley. It's the only major connectivity point we have of Srinagar with the rest of the country. And then come to Himachal Pradesh, Manali के पास में on the Pir Panjal की eastern side में we have this pass called as Rohtang Pass. Rohtang Pass Manali, वहीं से Solang Valley भी है. And further northwards is a place called Kelang. Kelang Lahul region का part है और Kelang में जो pass है it's called as Baralacha Pass. Baralacha Pass very important source regions of river Chenab. कुछ small rivers हैं like Chandra and Bhaga. They originate from near Baralachala. Okay, and this is on the Zaskar range. Now, अब क्या हुआ recent times में अगर आप travel कर रहे हैं from Manali to Leh, you have to pass through Rohtang Pass, Baralachala, and then go northwards towards Leh. And this northward journey was very mountainous across river Zaskar. तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक alternate route निकाला है. अब आप रोहतांग के बाद में बारलच्छा नहीं जाकर you take a slight westward say diversion into a new pass called as Shingula Pass. Shingula Pass is on Zaskar range और Shingula links Lahul region of Himachal Pradesh with the Zaskar region which is north of Zaskar mountains. So अब जो route है it is Rohtang Pass and then Shingula Pass and then goes northwards. There are places called as Padam and Darcha and finally they go and join near Leh a place called as Nimmo. So rather than going from Manali to Leh across Baralacha, now Manali to Leh is through Shingula Pass and crossing Padam and Darcha near Nimmo in Leh. तो ये हो गया आपके मेजर जो पासेस हैं इन जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश. अब आप देखिए नियर द तिब्बतन साइड ऑन द ईस्टर्न साइड you can see Imis Pass, you can see Chardingla Pass, you can see Changla Pass. ये बहुत important नहीं है, but nevertheless they are part of India-Tibetan region. So I hope you revise this and you get the sense of the passes of India in Jammu Kashmir, in Ladakh and in Himachal Pradesh.